YouTube channel. I'm your host, Dr. Mohan, and today is, I guess, 7th of March 2026. So tomorrow, जैसे हमें सभी को पता है, काफी इम्पोर्टेंट डे होगा पूरे इंडिया के लिए. फाइनल मैच होने वाली है वर्ल्ड कप की, एंड ऑल्सो इट्स 8th मार्च. वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन भी चारों ओर होने वाला है. एंड अगेन, जैसे हम पहले भी काफी बार यूट्यूब एंड टेलीग्राम लाइव कर चुके हैं फॉर आवर कम्युनिटी. So, and this is just a next episode after a long time, maybe after जून और जुलाई. उसके पहले हम काफी कंसिस्टेंटली रेगुलरली बेसिक साइंसेस और डेंटल क्लिनिकल साइंसेस पे काफी अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट डेंटल पीएससीज. जैसे अभी अभी गुजरात की जस्ट फिनिश हो चुकी है. काफी डिफिकल्ट पेपर था. ऑफिशियल वेबसाइट पे द क्वेश्चन पेपर has been published, और along with शायद कुछ आंसर कीज, मॉडल आंसर कीज, they are also there, so that if anybody has some objections regarding questions and secures या कुछ dilemma है, so they can uh, submit their feedback. और उसके बाद में शायद रिजल्ट होने वाला है. आई गेस अक्टूबर इज द मंथ फॉर द उत्तर प्रदेश एस्पिरेंट्स who are looking for getting a role, getting the responsibility, getting a seat in Public Service Commission, especially dental or health sciences के सेक्टर में. एंड आई गेस शायद पैटर्न उसका पिछले पेपर्स की तरह होने वाला है. सम ऑफ द जीके एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम द स्टेट, एंड lot of questions will be from the clinical dental sciences, but still सबसे important जो हमारा गोल होता है being a dental student. So NEET MDS 26, उसकी भी tentative date publish हो चुकी है. And depending upon the, let's say, format of the exam or the type of preparations we do follow for our own, let's say हमारा जो भी कुछ गोल होता है, INSET भी हो जाती है बीच में. बट जैसे मैंने कहा, right from the first day of the internship, everybody's goal, who is interested or not interested, will be or should be the national level, all India level की जो एग्जाम होती है. एंड आई होप काफी दिन बाकी है, तो वी विल स्टार्ट अगेन विथ सम ऑफ द बेसिक साइंसेस टर्मिनोलॉजीज, जिसपे काफी अच्छे खासे एमसीक्यू आ सकते हैं. ओके, what we are going to start today, it's a topic, apoptosis. So it is a form of programmed cell death in which a cell actively destroys itself through a controlled, energy dependent process. And for what? To remove the unwanted or damaged cells. So it's cell activity, okay, destructions of unwanted or damaged cells, but through a controlled and energy dependent process. So that is a definition of apoptosis. And the main characteristic is there is no inflammation in the surrounding tissues. So that is one of the major and prominent characteristic of apoptosis. No inflammation seen. So again, we will just divide. So it's apoptosis is a programmed cell death. Okay. And cell executes that actively. That is energy dependent होती है. And for what? To remove the degraded or damaged substances or cells. And uh, after that, key features. So it's a genetically regulated sequence of events. So there are multiple events. Okay, so and there is a particular sequence of those events leading to the cell shrinkage, first of all, chromatin condensation, second, DNA fragmentation, again going back to the membrane, membrane blebbing, and formation of the apoptotic bodies. So shell जो होता है वो shrink होता है.
अगेन क्रोमेटिन होता है, उसका कंडेंसेशन होता है. आफ्टर दैट डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है. So shrinkage, condensation, fragmentation, blebbing, and finally formation of the apoptotic body. So these are the multiple events and they occur in a particular sequence. Okay. Shrinkage, condensation, fragmentation, okay, blebbing, and finally formation of the apoptotic body. So this is the characteristic feature of this thing. And once the apoptotic bodies are quickly, like they are formed, they are quickly engulfed by the phagocytes or even neighboring cells. So the cell contents do not spill out and typically do not any inflammation. So immediate जो उसका होता है engulf हो जाता है आजू बाजू के cells से नॉर्मल होते हैं या पर्टिकुलर उनका पर्पस होता है कि phagocytosis. And why it is distinct different from the necrosis? Okay. So, what is necrosis? Which is the uncontrolled cell death due to the injury and often causes inflammation and tissue damage. So, inflammation and tissue damages. So, these are the characteristic feature of necrosis, which is not programmed or such kind of, let's say, genetic या active जो चीज होती है उसकी तरह नहीं होता है जैसे हमारी apoptosis process होती है. So what we have learned here, so what is the definition, what are the different steps involved, and finally result is what. So जैसे मैंने कहा कि पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी एंड आर्ट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इसके ऊपर ज्यादा जो वेटेज होता है फर्स्ट सेक्शन ए वाले पार्ट में uh, वो उतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू द अदर बेसिक साइंसेस. तो काफी बार एनाटॉमी के ऊपर along with let's say oral pathology या बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन डिफरेंशिएट सिंपली ये वाला क्वेश्चन एनएट सही था, फिजिक्स सही था, बायोकेम सही था. So purpose of learning these all basic sciences together is to connect all these subjects, all these concepts into one thing. So let's start again with the biological role. So for the normal development, such as removal of the interdigital cells in the embryo to separate finger and toes. Okay. तो सिंपल सी चीज अगर ये एपोप्टोपिक बॉडीज या प्रोसेसेस फॉर्म नहीं होगी तो नॉर्मल डेवलपमेंट जो होती है हमारी राइट फ्रॉम द जाइगोट टू मोरूला या डिफरेंट जर्म्स लेयर फॉर्म होते हैं उसके बाद में एम्ब्रायो की एक जो डेवलपमेंट होती है टू ग्रो इनटू मिनिएचर एडल्ट तो उसके ये एपोप्टोसिस नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है. विदाउट इट काफी malformations हो सकते हैं. ओके. सो मेंटेनेंस अगेन नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया. देन मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू homeostasis by continuously eliminating old or excess or dysfunctional cells in adult. तो जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको भी निकालना होता है. ओके. डिसफंक्शनल्स होते हैं, ओल्ड नहीं होते बट डिसफंक्शनल्स होती है सेल्स उनको निकालना पड़ता है और इवन डैमेज सेल्स होते हैं. So this is the second biological role performed by the these processes, which process normal development and maintenance. Then also immune functions, including deletion of self-reactive lymphocytes and the removal of infected or damaged cells. So, तो अगर cells infected होगी या damaged होगी तो उसे निकालना एक काफी important function होता है. And अगेन जैसे मैंने कहा कि खुद के सेल्स ही कभी कभी रिएक्टिव हो जाते हैं. सो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी का एक काफी अच्छा फंक्शन होता है परफॉर्म करना तो उसके लिए भी एपोप्टोसिस काम करती है. एंड फाइनली फोर्थ वन आफ्टर नॉर्मल डेवलपमेंट मेंटेनेंस इम्यून फंक्शन ट्यूमर सप्रेशन. So it is one of the most important critical biological role performed by this process. So tumor suppression by eliminating cells with irreparable DNA damage and or oncogenic changes.
So if this is the failure, अगर failure है इस process में, so it will contribute to the cancer development. So that's why pathology में ये काफी चीजें important होती है. Okay. Most of the time oral cancers होते हैं उसके ऊपर काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, क्लिनिकली भी आते हैं, रेडियोग्राफिकली आते हैं, हिस्टोलॉजिकली भी आते हैं. ओरल पैथोलॉजी वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा कि इट इज द कनेक्टिंग सब्जेक्ट इन क्लिनिकल एंड बेसिक साइंसेस. और उसमें भी ओरल कैविटी, ओरल कैंसर्स के ट्यूमर्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. सो व्हाट वी हैव लर्न, डेफिनेशन ऑफ एपिप्टोसिस, different sequences or events which occur in the process, and what is the basic thing which is done or performed, or why it is important to study apoptosis. So for normal development, for the maintenance, okay, for the immune function, and for the tumor suppression. So these are the four biological roles which are associated with this. अगर ये बहुत ज्यादा है apoptosis या बहुत कम है, तो what would happen? Okay, क्या हो सकता है? Let's see. So if there is a too little apoptosis associated with the cancer and some autoimmune diseases, because abnormal cells uh, they survive longer than they should. Okay, तो ये एक चीज हो सकती है कैंसर या इम्यूनिटी के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होके जो भी चीजें होती है. बट अगर ये बहुत ज्यादा है, दैट कैन बी another possibility also. So too much apoptosis, it contribute to the degenerative diseases or even ischemic injuries and some of the neurodegenerative conditions where excessive cell loss occur. Okay. तो हिस्टोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होता है. न्यूरोडिजेनरेटिव और डिजेनरेटिव डिसीज में तो एपोप्टोसिस काफी हद तक बढ़ जाता है. Okay. या बहुत कम है एपोप्टोसिस, तो उसके वजह से नॉर्मल सेल्स या जिनमें इररिपेरेबल डीएनए डैमेज हो चुका है, वो अगर लास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली that would be interruption in the normal homeostasis of the cells tissue और जो भी कुछ function है उसका. So this is the clinical relevance why we want to or why we should study apoptosis. Okay, too much and too high. ठीक है. And especially in oral pathology or even general pathology. So recognizing the apoptotic bodies histologically and understanding when that thing is up or down regulated is crucial. Okay. So जो inflammatory immune या neoplastic lesions होते हैं, उनकी histology या pathology study करने के लिए this is a concept. Okay. And in the next part, we are going to start with the stages. Okay. So there are different stages. Main तो होती है apoptosis की initiation. The second one is the early execution. Then there is a mild execution, okay, and late execution. So initiation and execution. Execution again divided into mild, early, mild, and late. Okay. And there are also different pathways for that. So we are also going to study that. Just we will wait for some time and we will restart.
सो वेलकम बैक। थोड़ा सा रिहाइड्रेशन थेरेपी कर लेते हैं। इट्स क्वाइट हॉट वेदर आउटसाइड। अभी भी काफी गर्मी हो रही है। द बेस्ट एंड मोस्ट important part for the preparation, exam preparation हो, that is taking care of your health. काफी साल लगते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। थोड़ा सा जूस, वाटर या जो भी आपको अच्छा लगता है टू मेंटेन योर होम्योस्टासिस, वो इम्पोर्टेंट होता है। And just be Saturday and Sunday, we are also planning to have a MCQ test on our channel. If you are a regular visitor to our community, so everybody knows that. Initially, we started with the daily MCQ tests in which we used to post daily 10 MCQs as, let's say, a test, और जिसके रिजल्ट्स हम पब्लिश करते थे एवरी डे एवरी नाइट। काफी अच्छा हमारा कम्युनिटी बिल्ड हुआ था उस एक्टिविटी से, बट लेटर ऑन टाइम वाज द इशू कि फिर वो वाली चीजें जो होती है इन द कम्युनिटी, सो अप्रिशिएट करना टॉपर्स को, रैंकर्स को, या इवन कुछ पीपल होते हैं हमारी कम्युनिटी में, एस्पिरेंट्स होते हैं कुछ जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते ही रहते हैं नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट। सो उन स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए तो काफी अच्छा लगता है कि उनकी वजह से ही हमारी कम्युनिटी एक्चुअली इतनी बड़ी हो चुकी है। राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 1000 एस्पिरेंट्स इन लेट्स से कम्युनिटी मेंबर्स हमारे हैं। बट थोड़ा सा अभी टेक्नोलॉजी भी इज एडवांस, सो इनिशियली काफी डिफिकल्ट होता था टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू थिंग विच इज इम्पोर्टेंट बट बेसिक होती थी, because not just only giving test or looking at the results is not sufficient for the entrance examinations. Thorough जो एक टेक्स्ट रीडिंग होता है वो भी काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो बिसाइड्स लाइक एडवाइजिंग टू गो फॉर एमसीक्यू रीडिंग, एमसीक्यू लेट्स से एनालिसिस, या जो टेस्ट हम देते हैं उसका एनालिसिस करने के बाद भी टेक्स्ट बुक रीडिंग जो होती है हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है, नॉट लाइक जस्ट लेट्स से कि एकेडमिक ईयर्स की एग्जाम होती है उसकी तरह नहीं, बट एटलीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यू कैन सिंपली नोट डाउन इन योर डायरी कि कुछ टॉपिक्स होते हैं बार बार उन्हें पढ़ना होता है। So you can make a diary for that. And going back to our topic, so different stages of apoptosis. So the intrinsic and extrinsic pathways are the two primary routes to apoptosis, differing mainly in their triggers. Okay, so trigger होता है apoptosis के लिए, and based on intrinsic और intrinsic pathways, तो उनको ऐसे divide किया गया है। सो इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, एंड द रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स, सो ट्रिगर फॉर द इनिशिएशन और विच मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, एंड द रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स, सो इनके ऊपर जो भी कुछ डिपेंड होता है उसके बेसिस पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज वो डिसाइड किए गए। And though both converge on the caspase activation of cell execution, so intrinsic pathway हो या extrinsic, both वो converge होके caspase पे act होते हैं। Okay, so let's start with one first वाला intrinsic. So जो trigger होता है intrinsic pathway के लिए, so internal cellular stresses, obviously जैसा name suggest करता है, so if there is a DNA damage or a hypoxia या ग्रोथ फैक्टर डिप्राइवेशन या ऑन्कोजीन्स, अगर ये सब चीजें है, व्हाट लाइक थिंग, डीएनए डैमेज, ऑन्कोजीन्स, ग्रोथ फैक्टर डिप्राइवेशन और इवन हाइपोक्सिया, so these are the triggers for the intrinsic pathway. And initiation site जो होता है intrinsic pathway का, so that is the mitochondria. So pro apoptotic BCL proteins, that is BACs or BAC. Okay.
These are the initiation sites माइटोकॉन्ड्रिया पे BCL2 family proteins जो होते हैं. They cause outer membrane permeabilization. So MOMP. Okay. So releasing cytochrome C to form apoptosome with FF1. Okay. So काफी complicated है, I know. Like not everything is required, but still जैसा मैंने कहा कि you should go for each and everything, not just like MCQ वाला चीज. So intrinsic pathway में trigger क्या है? Internal cellular stress एंड इनिशिएशन साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें BCL2 फैमिली प्रोटीन्स बैक्स और बैक जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टू रिलीज द साइटोक्रोम सी एंड कैस्पेस जिसे मैंने कहा कि ये सब चीजें इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक बेसिकली दे कन्वर्ज टुवर्ड्स द caspase activation. So caspase 9, okay, that is the key initiator caspase in the intrinsic pathway. And once that is initiated, regulation होता है tightly controlled by the BCL2 family balance. Okay, वो होती है रेगुलेशन करने के लिए. While extrinsic वाला वो भी देख लेते क्या क्या है उनका initiation site या regulators. So it extrinsic pathway पे external signals via death receptors. Okay, FAS, CD95, TNR, TNFR1, which are bound by the ligands like FASL or tumor necrosis factor alpha or granzyme या ग्रैंजाइम बी और परफोरिन जो साइटोटॉक्सिक टी सेल से निकलते हैं. सो एक्सट्रिंसिक पाथवे में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या डेथ रिसेप्टर्स फैस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा फैसल ओके ये वाली चीजें होती हैं ट्रिगर्स. ओके तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल और इनिशिएशन साइट जैसे हमने देखा कि इंट्रिंसिक पाथवे पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया. ओके बट अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन is the initiation site. So ligand binding forms that is this complex. So death inducing signaling complex. Okay. And procaspases 8. Okay. तो ये वाला हमें काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि कैस्पेसिस तो होती ही है बट कैस्पेसिस 9 इंट्रिंसिक पाथवे का की इनिशिएट होता है बट कैस्पेस 8 या वो एक्टिवेट होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स. ये दोनों चीजें इस पे एमसीक्यू आ सकता है. सो कैस्पेसिस 9 इन इंट्रिंसिक पाथवेज कैस्पेसिस 8 इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे. ओके mitochondria initiation site for the intrinsic and for the extrinsic it is the cell membrane. So key initiator caspase 8 होता है extrinsic में after initiation and the regulation जो होता है वो काफी faster होता है. Okay in extrinsic pathway. एंड फाइनली इसका रिजल्ट होता है जो इम्यून सर्विलेंस होता है दैट इज किलिंग वायरस या इन्फेक्टेड सेल्स. So autoimmune regulation defects in the fast. Okay. So BCL backs back या cytochrome C वो वाला इस इंट्रिंसिक पाथवे पे होता है कैस्पेसिस या डिस्क 8 या डिस्क जो होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स विद FADD ये वाली सब चीजें होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे. So this is the topic almost covered. I know like P53 उसका भी एक काफी अच्छा रोल होता है. So caspases 8 and 9 या डिस्क दैट इज डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा वाला हमने देखा कि BCL बैक्स एंड बैक वो वाली सब चीजें और
एंड लेट्स से कि हमने जो एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट था डिफरेंट स्टेजेस, उसमें थोड़ा सा हमने सो डिवाइडेड इनटू इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन फेसेस, जैसे मैं हमने पहले भी कहा था. सो अर्ली, मिड एंड लेट एग्जीक्यूशन. ओके, सो इनिशियली जैसे हमने कहा कि ट्रिगर होती है थ्रू इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक बार स्टिमुलाई होने के बाद में कैस्पेस एक्टिवेशन होता है, बट वो कैस्पेस एक्टिवेशन के बाद में लेट्स से कि अर्ली एग्जीक्यूशन में सेल श्रिंक्स, पिक्नोसिस इज सीन, condensation of chromatin also occurs. Along with that, cytoskeleton degrade and plasma membrane blebs are formed without the loss of integrity. तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इनिशियल अर्ली एग्जीक्यूशन में होती है, बट नॉट द न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन. कंडेंसेशन होता है सेल का, क्रोमेटिन का, डिग्रेडेशन होता है सेल साइटोस्केलेटन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ब्लेब्स आ जाती है, बट न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन अर्ली एग्जीक्यूशन में नहीं होता. While in the mid execution, so nuclear fragmentation, that is karyohexis is seen, that is DNA breaks into nucleosomal units and cytoplasm compacts. Okay, so initiation में क्या होती है? अर्ली एग्जीक्यूशन में पिक्नोसिस, कंडेंसेशन, ओके, मेम्ब्रेन की प्लेबिंग. मिड एग्जीक्यूशन में कैरियोहेक्सिस होता है एंड लेट एग्जीक्यूशन में फैगोसाइटोसिस, जो भी कुछ सेल फ्रैगमेंट्स हो या एपिटोपिक बॉडीज़ पे जो ऑर्गेनल्स होती है न्यूक्लियर पीसेस, उनका उन फैगोसाइट्स उन पे एक्ट करते हैं विदाउट इन्फ्लेमेशन. सो आई होप ये वाला अच्छा खासा टॉपिक हमने कवर कर लिया है बेस्ड ऑन दिस सेशन. पैथोलॉजी और भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स है, एक्यूट इन्फ्लेमेशंस एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, उस पर भी एमसीक्यू आता है. But basic thing is what is the difference between apoptosis and necrosis, that is to be remember, जो काफ़ी अच्छा हमने आज पढ़ा है. आई गेस सभी को एस्पिरेंट्स को ये वाली चीज़ें जो है धीरे धीरे एक फ्लो में लाने के लिए फॉर द नीट MDS 26 विल बी हेल्पफुल. और आई विल बी ट्राइंग टू पोस्ट MCQ टेस्ट बेस्ड ऑन टूडेज टॉपिक, जो हमारा टेलीग्राम लाइव या यूट्यूब लाइव होता है उसके रिगार्डिंग. सो एपोप्टोसिस या पैथोलॉजी के ऊपर MCQ विल बी पोस्टेड. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, क्विक डेंटल इज़ द नेम. काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है वहाँ पे. और नेक्स्ट डेंटल PSC के लिए भी हमारा एक ग्रुप है, उसमें भी काफ़ी ऑलमोस्ट 500+ एस्पिरेंट्स जो डेडिकेटली प्रिपेयर करते हैं फॉर द GPSC, MPPSC, MPSC, PPSC के लिए जो स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उससे. So stay tuned. Goodbye. Have a great weekend. Happy Women's Day to each and everybody there. Not just for the let's say ladies, but for the gentlemen as well. क्योंकि काफ़ी अच्छी जो अपब्रिंगिंग होती है उनमें मदर्स का, सिस्टर्स का, जितने भी फीमेल फिगर्स होते हैं अराउंड, इंक्लूडिंग टीचर्स, गाइड्स, फ्रेंड्स, उनका ही होता है. तो दिस इज़ अ डे टू एक्चुअली show appreciation, not just for the one day but to start from tomorrow, and keeping all the emotions, all the things in mind and heart and body and soul, that how these female figures are transforming our lives every day without any let's say complaint. Okay, एंड सेकेंड वाली देखते हैं फाइनल वाला मैच है 5:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है. वी विल बी ऑल्सो कवरिंग दैट टुमारो, शायद लाइव में ही करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय एंड नेवर स्टॉप रीडिंग.